Hi, good morning, ohayo gozaimasu, namaste. I'm Chef Kumar from Tokyo, Japan. So, today I'm going to show you how to make a super healthy breakfast, quick, easy, and healthy. So, it's tofu. So, today I'm going to show you how to make an easy recipe of tofu with oyster sauce and sesame seeds. Super healthy food. So, let's start. So, please, I have a request. Before we start the video, subscribe my channel and icon bell all. Thank you very much. So, to make a tofu, we need a tofu, of course. I took a local tofu, 500 gram, oyster sauce, 3 tablespoons, sugar, vinegar, cornstarch, chili flakes, sesame seeds, fresh ginger chop, spring onion chop, and red chili is optional. So let's start. So now we are going to make a tofu pieces. So I take a tofu like this. It's very soft, so make sure don't broken. So first we make it half from here. Have to cut. You can make a pieces according to your requirement. And then I make it 3 from here, and then half. So I cut the tofu like this size. Now we are going to boil it first. If we boil it first, so it become hard, not broken when we make it with the sauce. So let's boil it first. First we boil the water, and after boil water, we are going to put tofu very softly, just like this, one by one. Be careful, not broken. We need a one boil. Just wait for 3 to 5 minutes. We will cover it so tofu will be cooked properly. So make sure it's not stuck together. Okay. So just wait for 3 to 5 minutes. After 3 to 5 minutes, we will close the induction and softly we will take out the tofu and put it in the paper like this so it becomes dry early. कॉर्नस्टार्च में अच्छे से हम उसको मिला लेंगे. Add oil around 3 tablespoons. First we heat the pan. After oil become hot, now it's time to put tofu very softly. You can see from second, दूसरी साइड से भी टोफू हमारा अच्छे से पक चुका है. ज़्यादा नहीं पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है. अगर हम ओवर कुक करेंगे तो वेरी हार्ड हो जाएगा और फ्लेवरलेस हो जाएगा. तो चलिए अब इसको हम ऐसे एक बर्तन पे निकाल लेंगे
नीचे टिश्यू लगा के, जिससे इसका सारा ऑयल उसमें निकल जाए। हम उसी सेम पैन के अंदर, सेम ऑयल के अंदर हम 1 टेबल स्पून जिंजर चॉप डालेंगे। चिली फ्लेक्स 3 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून राइस विनेगर, थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे इसके साथ। और ब्लैक पेपर। फ्रेश स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे। अब हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। सॉस उसे ऐसे डाल देंगे जिससे कि हमारा टोफू टूटेगा भी नहीं और दिखने में भी, सर्व करने में भी अच्छा लगेगा। फाइनल में सिसमी सीड्स और ऑप्शनल है, ये भी आप डाल सकते हैं।